साला बड़ा कथा हो गया। होस्ट कोई हो रहा है अंदर ठीक है सर होस्ट कोई हो रहा है कौन है होस्ट कोई हो रहा है सर
Hello. There is no sound from your side. Hello. 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 It's audible now. Sir, Yes, sir, audible. yes, sir. Yes, sir, Yeah, it is yeah. audible. It's audible now. Yes, sir. Okay. So it will start very soon. Yes, sir.
Our worthy chief guest, Dr. Avtar Singh, a renowned orthopedic surgeon from Amandeep Hospital, Amritsar. Our honorable keynote speaker, Dr. Sujata Roy, Associate Professor from the Department of Philosophy, New Delhi. Guest of honor, Dr. Amit Yadav, Director, Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, and other distinguished guests, professors, research scholars, and dignitaries who are attending this conference both on online and offline mode from all over India and also from the far-reaching corners of the globe. We are thrilled to host this gathering of diverse intellects and experiences with distinguished guests on today's ICPR-sponsored two-day international conference on sustainable and environmental well-being, philosophical and religious perspective from the Indian knowledge system. As we gather for the inauguration of the conference, let us begin the program with the sacred tradition of lighting the lamp, which will remind us the power of illumination and enlightenment. I humbly request all the esteemed dignitaries on the stage to kindly come forward for the auspicious ceremony of lighting the lamp. Before we begin the ceremony, I kindly request everyone to please remove their shoes as a mark of respect.
Thank you, everyone. Moving forward, to share the insights and introducing the theme of the conference, highlighting sustainable and environmental well-being in the Indian knowledge system, I feel privileged to invite on stage Mrs. Anu Gandhari, Head of the Department Philosophy. Her tireless dedication and remarkable efforts have been instrumental in bringing and planning this conference and making this a grand success. So I welcome you, Manu. Respected esteemed professors, Chairman Sir, Director Sir, Principal Sir, and all honorable members of Managing Committee and faculty members of Hindu College, good morning to all. Hindu College has organized international conference on the theme Sustainability and Environmental Well-being, Philosophical and Religious Perspectives from the Indian Knowledge System. As a convener of this conference, it is a matter of great honor to introduce the theme of this international conference. जड़ और पत्तों से जुड़ी है ये कहानी, धर्म का संदेश है पर्यावरण की जुबानी। धरती को बचाना है सबकी जिम्मेदारी, संस्कृति और ज्ञान की मिली जुली कहानी। Sustainability and environmental well-being are among the most urgent concerns of the 21st century, demanding a holistic rethinking of human-nature relationship. Indian tradition enshrines respect for nature. It presents nature not only as mother that sustains our life, but also as the abode of divine being. Indian philosophy emphasizes the interconnectedness of all beings as seen in the concept of Vasudev Kutumbakam. The word is one family, which underlines a global ecological ethic. The Vedic tradition honors the Panch Mahabhutas, earth, water, fire, air, and space as the foundation of existence, highlighting the sacredness of natural resources. In Atharvavedas, it states, Mata Bhumi Putro Aham Prithvya. Earth is my mother and I am her son. This hymn expresses the relationship between humanity and the earth, not as an exploiter, but as a child in a sacred bond with the mother. The Yajurveda emphasizes ecological harmony. Om Gaya Shanti Antariksham, Shanti Prithvi, Shanti Rapa, Shanti Oshadhyaya Shanti.
May there be peace in the heavens, peace in the atmosphere, peace on earth, peace in water, peace in plants. It is mentioned in the Yajurveda. Thus, Vedas and Upanishads invite us to view sustainability not only as environmental concerns but as a spiritual dharma. Buddhism emphasizes karuna, ahimsa towards all living beings, promoting mindful consumption and ecological harmony. Jainism, through its principle of aparigraha, advocates minimal consumption and environmental respect. Sikhism envisions creation as divine, and it is stated in Guru Granth Sahib, Sach Teri Kudrat Sache Pasha. And it is also stated in the Guru Granth Sahib, Pavan Guru Pani Pita Mata Tarat Mahat, affirming creation as divine and urging humanity to live in humility and service. In today's age of environmental challenges, climate change, biodiversity loss, and resource degradation, humanity is compelled to seek wisdom that transcends material solutions. Today's reality in Punjab, Haryana, Uttarakhand, Himachal Pradesh makes us stop and think. Falling groundwater levels, frequent floods, and unpredictable climate changes are clear reminders of the serious environmental challenges we are facing. These issues call for our urgent care and action. Sustainability and environmental well-being cannot be secured by policies and technology, but requires a transformation of consciousness towards respect for the natural world. This conference provides a platform to revisit such timeless wisdom, bringing it into dialogue with contemporary global challenges, and seeks to bring together scholars to sustainability, offering pathways that integrate material progress with spiritual responsibility. By engaging with scriptural wisdom and modern ecological challenges, it inspires to generate holistic approaches that integrate science, ethics, and spirituality for the well-being of all. Thank you. So thank you, ma'am, for your enlightening words. Now I take an opportunity to invite our respected director, Dr. Rakesh Joshi, sir, to formally welcome our dignitaries, honorable guests, and participants to this conference. I request sir to share the words of welcome. Morning, respected dignitaries, distinguished speakers, guests, our guest of the day, Dr. my faculty, management, students. On behalf of Hindu College family, we welcome you all. ये एक बहुत ही बढ़िया टाइम है, जब मौका है, जो आज की डिमांड। अब किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जो कुछ हो रहा है, ये सब इंसान ने खुद किया है। एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस ह्यूमन के आने से नहीं शुरू हुई। मिलियन ईयर अगो जब लाइफ ओरिजिनेट हुई, तभी से ये एनवायरनमेंट जनरेट होना शुरू हुआ, एवोल्यूट हुआ, इवॉल्व होता होता एक बहुत बढ़िया सिस्टम बना, जिसमें कुछ हजार साल पहले ह्यूमन आए, और ह्यूमन ने अपने ब्रेन का कुछ ज्यादा यूज किया और हर एनवायरमेंटल बैलेंस को इम्बैलेंस करने की कोशिश शुरू की। और वो इम्बैलेंस आज वर्ल्ड लेवल पे कहां पहुंच गया है, ये हम सब देख रहे हैं। कहां पे सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड्स, आप नाम लो। जो नॉर्थ इंडियन है, उन्होंने अपने आंखों के सामने पिछले 40-50 साल में हिमालय, हिमाचल प्रदेश को उजड़ते हुए देखा।
ग्रीनरी कैसे उड़ी, क्या कुछ हुआ, क्योंकि हमें होटल्स चाहिए थे, हमें नेचर नहीं थे। और आज बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है कि जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इसकी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि लोगों तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब इस तरह के जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो अपने व्यूज, अपनी स्टडीज, जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लोगों को अवेयर करें। तो पहले जो अवेयरनेस थी वो प्रैक्टिकल नहीं थी, अब लोगों को पता नहीं चलता। हम सोच ही नहीं सकते थे कि कभी पंजाब में इतना बड़ा फ्लड आ सकता, वो हम सब ने देखे। हम सोच ही नहीं सकते थे कि एक ही सीजन में 100 से ऊपर के क्लाउड बर्स्ट हो जाएंगे। तो इन सबकी अवेयरनेस के लिए ये प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी। ऐसे ही हमें पिछली भी एक एनवायरनमेंट की हमने पिछले 6 महीने पहले करवाई कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमें पोल्यूशन बोर्ड ने बहुत हेल्प की। इस बार जो इंटरनेशनल हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ICPR, उसके डायरेक्टर हमारे बीच में हैं। हम उनका थैंक्स भी करते हैं, उनका वेलकम भी करते हैं कि उन्होंने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दी, अपने व्यूज को और अपने लोगों के व्यूज को सोसाइटी तक पहुंचा, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस की स्पॉन्सरशिप सारी काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च से ही हमें मिली। अनु कंधारी जो कन्वीनर है, जो इससे पहले बता के गए हैं, इन्होंने एक पहले भी बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस करवाई और इनका थीम बड़ा अच्छा था। ये एनवायरनमेंट को सोसाइटी के साथ और रिलीजन के साथ भी जोड़ती है। अगर हम रिलीजन की बात ही करते हैं तो इसको अलग अलग तरह से देखा जाता है। कुछ आस्था है, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इसको इस तरह से देखते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी धर्म है, हिंदू धर्म जो है, इसमें देवी देवताओं के साथ एनिमल्स को एसोसिएट किया। किसी के साथ स्नेक है, किसी के साथ रैट है, किसी के साथ कोई और एनिमल है। तो ये यही था कि इसको आस्था के साथ जोड़ दो ताकि इनको खत्म करने की कोशिश ना की, क्योंकि ये समझाना बहुत मुश्किल था कि स्नेक खत्म हो गए तो चूहे आ गए। जब चूहे आ जाएंगे तो बंगाल का फैमिन याद कर दो, वर्ल्ड मतलब इंडियन सब कुछ उड़ गया था, वर्ल्ड लेवल पे उसका इफेक्ट। तो ये एनवायरनमेंट समझाने में रिलीजन ने भी बहुत हेल्प की। नो डाउट कि उसको बाद में लोग एक्सप्लॉइट कर जाते हैं, क्योंकि वो फिर ह्यूमन ब्रेन। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो उसके लिए हम थैंकफुल हैं मैडम अनु कंधारी के, ICPR के, जिन्होंने हमें सोसाइटी के लिए कुछ बहुत फ्रैक्शन है चाहे, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस से अगर 2-3 लोगों तक भी उसका फायदा पहुंच जाए तो हम सक्सेस। तो अगेन आई एम थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू कॉलेज फैमिली, मैनेजमेंट, स्टाफ और स्टूडेंट्स की तरफ से सब गेस्ट जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir, for your warm words of welcome. Now, moving further, I invite our chairman, sir, secretary, sir, finance secretary, sir, and director, sir, principal, sir, to please come forward on the stage to honor our chief guest, Dr. Avtar Singh, whose dedication has inspired us all. I humbly invite Dr. Avtar Singh to come forward to receive the honor
And I also invite Sethi sir to please join. It's now privileged to welcome our guest of honor, Dr. Amit Yadav, Director, Indian Council of Philosophical Research, New Delhi. His valuable guidance and immense contribution has made it possible for us to organize this profound international conference in the prestigious arena of Hindu College. With a great honor and respect, now I invite Dr. Sujata Roy from the Delhi University to come forward and accept our heartfelt gratitude. I also request Mrs. Anshu Gupta and Mrs. Anju Mahajan to please come on the stage and do the honor of felicitating our esteemed guests. Now I take the privilege of inviting Dr. Shivani Sharma, Professor, Department of Philosophy and Coordinator, Interdisciplinary Center from Islamic Vivekanand Studies, Punjab University, Chandigarh, to kindly grace the stage with our presence and accept our humble token of gratitude. I also request Mrs. Ritu Jaitley and Dr. Rama Sharma to come forward on the stage to do this honor. Now I request Professor Namita Nimbalkar from the Department of Philosophy, University of Mumbai, to kindly come on the stage and graciously accept a symbol of thanks from Hindu College. I would request Mrs. Navdeep Kaur and Dr. Neha Sethi to please come on the stage and do the honor of felicitating our esteemed guests. Now I humbly request Dr. Bharatdeep Kaur Sanghu, Head of the Department of Guru Nanak Studies, Guru Nanak Dev University, to kindly come on the stage and graciously accept a souvenir from Hindu College as a token of our respect and gratitude. Now I invite Dr. Mohammed Singh, Assistant Professor, Department of Guru Nanak Studies, Guru Nanak Dev University, Amritsar, to please join on the stage and accept our heartfelt gratitude in the form of token of appreciation from Hindu College. Now I request Dr. Shailendra Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Philosophy, Central University of Allahabad, Prayagraj, to accept the token of gratitude.
Next, I invite Dr. Harinder Kaur Sohal, Assistant Professor, School of Punjabi Studies, Guru Nanak Dev University, Amritsar. Kindly grace the stage and receive a souvenir as a symbol of thanks from the college. It's my honor to and accept our gratitude. Now I invite Mrs. Rita Sharma, past district chairman, Inaugural Club of Amritsar, to please come forward and accept the token of the thanks. Now I invite Mrs. Bindu Maggu, Joint Secretary, Inaugural Club of Amritsar, to please join us on the stage and accept the souvenir. Let us now invite our alumni Sardar Narinder Singh, founder T. Rani NGO, Welfare Society, to kindly come on the stage and receive this souvenir for his relentless service and support to the college. We also take this moment to felicitate one of our proud alumni, Mr. Deepak Arora, a renowned businessman, and I request him to kindly honor. So now I invite Dr. Amandeep Kaur, Associate Professor, Department of Textile and Apparel, Technological Institute of Textile and Sciences, Bhiwani, Haryana, to kindly join and accept the token of appreciation. With a great honor, I invite Dr. Rajneesh Arora, Managing Director, Amritsar Group of College. Now I would like to request Dr. Ravinder Singh, Principal, Guru Kashi Gurmat Institute, Talwandi Sabo, Bakinda, to kindly come forward and receive the momentum. Now I call upon Dr. Harpal Singh, Principal, Pilot Singh Gurmat College, Amritsar, to please grace the stage and accept this token of respect and remembrance from the college. Now I invite representatives from Nehru Mohan Indra Das Trust, Ms. Rita and Ms. Anita, to receive the token of appreciation as a gesture of our respect and gratitude. Now I invite Dr. Chandra Prakash, Assistant Professor, IP Gujarat, Punjab Technical University, Kabul, please grace the stage and accept the token of gratitude from the college.
now invite Dr. Manish, Assistant Professor, Department of Philosophy from the College of the University. Please come on the stage. And finally, I invite Dr. Subhash Chandra from the University of Dhab. Please grace the stage of the certificate of gratitude from the college. So thank you all to do these honors. Thank you. आप सबकी उपस्थिति से ये अवसर उज्जवल हो गया। इस मंच का मान और सम्मान दुगना हो गया। आपकी परिस्थिति से बड़ा ये समारोह का मान ज्ञान और विचारों से होगा उज्जवल कल का निर्माण। With these words, on the behalf of Hindu College, I take this opportunity to express our heartfelt appreciation for the benign presence of our esteemed guest, Dr. Shyam Sundar, a research associate from America, Dr. Kaveri Joshi, immunohematologist from Joshi Hematology Clinic, Dr. Daljeet Kaur, a renowned psychologist, Uppal Hospital, Amritsar, Dr. Jasleen, psychiatrist, Uppal Hospital, Amritsar, Dr. Ravikant Sharma ji from Amandeep Hospital, Amritsar. Your gracious presence has really added value and dignity to the conference, and we are deeply honored to have you all with us today. I also appreciate the presence of Miss Amita Gautam, Miss Ranjita, Miss Mahima Yadav, PhD research from Dayal Educational Institute, deemed to be the University Dayal Agra. So further on, I feel elated to introduce to our eminent keynote speaker, Dr. Sujata Roy Abhijat. Dr. Sujata Roy Abhijat is an associate professor in the Department of Philosophy at the University of Delhi. Prior to her tenure at the University of Delhi, Dr. Abhijat assumed the role of assistant director at the Regional Center for Urban and Environmental Studies in Lucknow. Her professional trajectory also encompasses a distinguished stint as an environmental consultant for important government projects, including significant engagements with the World Bank over the period of 3 years. Dr. Abhijat's professional repertoire underscores a profound commitment to addressing development intricacies with a particular focus on environmental dynamics, social paradigm, and gender equity concern, notably within rural context. Dr. Abhijat's academic journey commenced with her undergraduate studies at Miranda House, followed by the postgraduate tenure at St. Stephen's College, where she cultivated a profound interest in environmental ethics, applied ethics, and gender studies. As a prolific author, Dr. Abhijat has contributed extensively to both national and international discourses through numerous articles disseminated across in Springer and other reputed journals. Notably, her seminal work, I quote, on environment and religion, I unquote, stands a testament for her erudition in elucidating the intricate intersections of environmental consciousness and spiritual ethos. Recent publications such as, I quote, Environmental Consciousness and Sri Aurobindo Learnings for the Present, I unquote, and Where Does the Privilege in Veganism Come From, exemplify her ongoing commitment to advancing discourse in environmental ethics, religion, and feminism. Beyond the scholarly pursuits, Dr. Abhijat is an active participant in national and international conferences where she disseminated her research findings and engaged in academic dialogue. Her scholarly stewardship extends to mentoring aspiring scholars, as evident by her successful supervision of several PhD and MPhil dissertations. Recognizing her scholarly contribution and academic leadership, Dr. Abhijat has been honored with the prestigious ICPR Fellowship. Presently, she assumes a pivotal role of convener of the Gender Champion Committee, an initiative catalyzed under the aegis of the Ministry of Human Resource Development. Additionally, Dr. Abhijat has served
on the advisory board of the Delhi Pollution Committee, aligning her expertise with the governmental endeavors aimed at addressing environmental challenges within the region. So her engagement with the diverse literacy work reflected her interdisciplinary approach and her dedication to promote understanding of cultural and process. With this, I would like to invite on stage on the dais Dr. Sujata Roy to please come and share the views on this topic. Thank you so much, madam. Good morning to everyone. Very respectful good morning to the chief guest present over here, the chief patron of the college, director ICPR, principal college, all distinguished dignitaries present here, organizing committee, esteemed faculty members, and of course, my dear students. All the technical staff who has helped with this program, I understand it is a mammoth work, so my very good morning to all of you. So I'm very grateful to this college to have given me this opportunity to come and share few thoughts with you. Given the paucity of time, I don't know how much justice I'll be able to do. However, I'll try and touch upon not only the theories that we do in the philosophical domain, but also try to align it with the self SDGs, as they call it, Sustainable Development Goal. Because the need of the hour is not only to understand the environmental crisis, but also to weave the theory into practice. And I'm indeed very grateful to the college to have given me this opportunity to share my thoughts with the august audience. I can be timed and I can be told when I have to stop because I think it is a slightly longish presentation that I have. So as we stand here today, we understand that the 21st century is, inundated with huge ecological crisis of the magnitude of a different kind. There's a biodiversity loss, there's a resource depletion, there is environmental hazards of unprecedented magnitude. Sustainability and environmental well-being are no longer niches of scientific domain, but central challenges, not only to the human survival, but also to the planetary health. Because if we try and solve just the human problem or the human survival, somewhere we are not doing justice to the environment at large. So the entire effort of Indian knowledge system, IKS, as I may call it in this speech or talk, whatever you may like to call it, the Indian knowledge system tries to look into that how both can be taken together, the interest of human well-being and of course the environmental well-being, because both cannot work in isolation of each other. So far, there are a lot of developments that has happened at the world level, because when we try and understand environmental problem, we know that it needs to be addressed at global level, at national level and at local level. हम सबको अपने अपने तरीके से छोटे-छोटे steps लेने पड़ेंगे to understand this problem. इस effort को देखते गए global level पे बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे Paris climate change, sustainable development goal. There are a lot of international conventions which understand there is a recognition to address the sustainability, and that needs to be addressed by all. Let it not be just left to academic domain or to the domain of scientific people or to the economic people or policy makers or to the government. ये हम सबका problem है. जब तक हम ये नहीं समझेंगे ये पर्यावरण हम सबका है, तो शायद इस तरह के जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते आए हैं और हो रहे हैं, कहीं ना कहीं it will just address it very superficially. It is a very shallow approach to the entire problem. इस चीज को हम सबको अपने अपने अंदर इस जागरूकता को लानी पड़ेगी और address करना पड़ेगा. So जब Indian knowledge system की हम बात करते हैं, तो we know that there is a rich philosophical and religious resource to which we can understand human well-being and also sustainability. Sustainability और human well-being दोनों को ये address कर सकता है. और हम ये भी जानते हैं कि जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मानसिकता रही है वो एक एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच था. इस एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच में ह्यूमंस वाज प्लेस्ड अबव नेचर.
There was a earth pyramid. एक पिरामिड आप समझने की कोशिश करें जिसके ऊपर humans were placed because humans were supposed to be superior to every being. Why? Because somewhere in philosophy we are also to be blamed. Descartes mentioned that human res cogito ergens. If you think you are superior, we thought yes we can think, and not only we can think, now we have technological advancements to our credit. So now we need to understand that in the Indian knowledge system, we'll try and look into the resources of philosophical domain. We'll try and understand what were those concepts in the Indian knowledge system, in the Vedic and Upanishadic traditions, in our epics, which talked about environment directly and indirectly. When it talked about environment, it gave us concepts like Rida, cosmic law. It talked about dharma, duty. Aapki duty kya hai? Not only towards every being, but also towards the environment. Concept of ahimsa, aparigraha. There are replayed examples in Indian knowledge system. And to understand this, we'll have to see how this Vedic Upanishadic thought weaves into the modern articulation. क्योंकि अब जिस एरा में हम खड़े हैं और बात कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है तो आप वापस वेदास और उपनिषद खोल के ही उन बातों को समझें. ये एक फिलॉसफी है जो हमारे लाइफस्टाइल में woven होनी चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए. And apart from this, there has to be a modern articulation of traditional thought. Hence the relevance of Indian knowledge system to understand environment well-being and to understand sustainability. When I want to talk about this, since I already mentioned that it is a global phenomena, it is a local phenomena, it is a national phenomena, I'll slowly and briefly take you into what happened in the Western world. Western world understood somewhere that human environment was of dominance. और ये कहाँ से आ रहा था? ये उनके अंडरस्टैंडिंग से आ रहा था. लिन वाइट जूनियर ने इस पे एक बहुत अच्छा बुक लिखा है, द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसमें उन्होंने ब्लेम किया है कि वेस्ट में जो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जूडियो क्रिश्चियन डोमिनेशन अप्रोच था. क्या था ये जूडियो क्रिश्चियन डोमिनेशन अप्रोच? इन बाइबल्स एंड साल्म्स एंड जेनेसिस वहां पे मेंशन है दैट ह्यूमन हैव द डोमिनियन. They have the dominion over everything that exists on the earth. Anything that flies, that swims, that crawleth upon earth. अगर आपने इंसान को इस तरह की पावर दे दी, power corrupts, absolute power corrupts, absolutely, we all know. So somewhere this genesis has come from the Judeo-Christian approach. Lot of literature was written. ये बहुत, अगर Western world को देखेंगे, तो this is fairly new domain, environmental ethics. Environmental ethics है क्या? हम यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि human beings environment के साथ कैसे environment को ethical domain में ले आए और उसको भी वो एथिकल रेलेवेंस दी जाए जो शायद हम एक दूसरे को, इंसान को, मनुष्य को देते हैं. तो जब मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करती हूँ तो 1960s and 70s में there were a lot of literature which was being written. One is Historic Root of Ecological Crisis by Lynn White Jr. Second was Rachel Carlson's Silent Spring. Why I'm insisting? Because मैं इसके साथ एक कुछ तुलनात्मक बातें करूंगी, मैं कुछ सिमिलैरिटी ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी. Apart from this, Garrett Hagen talks about the population, the tragedy of the commons. Paul Helrich talks about the population bomb. I mean, humans, we know we are a huge population. And क्या ये मैं यहाँ पे खड़े होके सजेस्ट कर सकती हूँ कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ह्यूमन पॉपुलेशन को कर्टेल किया जाए, इनको कम किया जाए? आई एम सॉरी इफ आई से दिस, I myself will not be allowed to say this because we put humans first. But एक जागरूकता होनी चाहिए. ये जागरूकता कैसे आएगी? Somewhere the need of the hour is to weave it into religion, cultural traditions, philosophy, ethics, and the role of IKS becomes very, very important. तो रेचल कार्लसन ने अपने साइलेंट स्प्रिंग में उन्होंने अपने एक बहुत अच्छा उपन्यास है, मैं चाहूंगी कि आप सब पढ़ें अगर आपकी रुचि है एनवायरनमेंट के प्रति. तो वो एक बहुत अच्छे एक छोटे एनेक्डोट से स्टार्ट करती है, एक छोटी कहानी है जिसमें कहती है द फर्स्ट लाइन इज अ फेबल फॉर टुमारो, कल के लिए क्या दृश्य होगा. तो उन्होंने छोटा सिविलाइजेशन, एक छोटा शहर का एग्जाम्पल लिया है, एक गांव का एग्जाम्पल लिया है जहां सब कुछ बहुत सामान्य तौर से चल रहा था, बहुत ही लुभावना दृष्टि था, अच्छे पेड़ पौधे, पतझड़ में ऐसे लगता था जैसे लौ जल रही हो, रंगीन पत्तों की.
सर जो यूएस से है वो जानते हैं कि लाल पीले पत्ते, it looks beautiful in the autumn. In spring it becomes even more beautiful because there are a lot of natural flowers and wildflowers, all along the path. And मछलियां तैर रही थी, बहुत दूर से लोग आते थे और इस मनोरम दृष्टि का अनुभव करते थे, इसका लुत्फ उठाते थे, इसके पास थे। फिर अचानक एक दिन सब कुछ रुक सा गया और चिड़िया थी पर शक भर रहे थे, पेड़ कुम्भला से रहे थे, फूल उग तो रहे थे सेब के पेड़ पे पर फल नहीं आते थे। हैन जो है वो अंडे तो दे रही थी पर उससे चूजे नहीं निकल रहे थे। All in all, everything looked that it has come to a stop, a standstill. ऐसे प्रतीत हो रहा था शायद किसी ने जादू टोना कर दिया हो। ये तो एक बहुत अच्छा हरा भरा लुहावना दृष्टि था, क्या हो गया? फिर कुछ लोगों ने नोटिस किया कि जो सीमेंट थे, जो दीवार थे, जो बहुत सारे पत्थर थे, उस पे एक वाइट परत सा आ गया था और धीरे धीरे, इट वॉज नॉट स्नो विंटर, ये व्हाइट परत फैलता गया एंड इट टुक द फॉर्म ऑफ अ स्नो. This was not snow. This was chemicals, fertilizers that we had sprayed upon the ecosystem, the environment over the years. और ये मुझे पता है ये काल्पनिक चीज है, ये कहीं नहीं हुआ है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये हुआ है, बट क्या हम इससे बहुत दूर हैं? क्या हम ये नहीं जानते कि अगर इस तरीके से हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं इकोसिस्टम पे, तो आज न कल हम इस जगह पे, इस चौराहे पे हम सब खड़े मिलेंगे। कभी ये छोटे इंडिकेशन से आपको इस चीज की अनुभूति देने की कोशिश करता है, कभी इट कम्स इन अलार्मिंग फॉर्म, एज प्रिंसिपल सर मेंशन in a very non-philosophical way, what is this cloud burst? ये क्या सामान्य है कि इस 1-2 महीने में आपने हर स्टेट में देख लिया कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है? ये क्या सामान्य है? ये क्या? तब इंसान जो बहुत ही ताकत शार्प है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये कहता है, इट इज गॉड्स फ्यूरी, इट इज नेचर्स रैथ, हु हैज क्रिएटेड दिस? सर ने ये भी कहा था, ये ह्यूमन क्रिएटेड, इट इज एंथ्रोपोजेनिक, created by the human beings. अब अगर मैं इस उदाहरण को थोड़ा और लाके कॉन्टेक्चुअल तौर पे यहाँ पंजाब में मैं ये बातें कर रही हूँ, तो आप सब शायद रिलेट करेंगे कि मुझे बताया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया की जरूरत थी 1970s में, MS स्वामीनाथन जी ने उस पर बहुत काम किया, बिकॉज उड़ीसा, बंगाल, every state was suffering from famine. The need was of the hour was more paddy, more wheat. Of course, green revolution came, and in it and along with it came the use of pesticides. What happened? Farmers, agriculturists, अगर आपको ये पता चला कि ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करके हमारी यील्ड ज्यादा होगी, तो नेचुरली हम ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि at the end of the day we want maximum profit. Earth has become a resource. ये एक रिसोर्स है जहां से हम बस ड्रॉ करते हैं, ठीक है? हम इससे क्या और निकाल सकते हैं, हमारी मानसिकता बस इतनी है। So when I talk about this, I am told that there is already a train running from the Malwa region of Punjab, which is called Abhohar Jodhpur Express. Another very ominous name is cancer train. ये इसलिए है कि कुछ लोग जो कैंसर, because of extra use of fertilizers, are going to this Jodhpur for probably a cheaper treatment. The present story tells us, ये जो एक साइलेंस की हम बात कर रहे थे, it draws our attention to the era of technocentric age. हमारे पास हर काम का समाधान जो है टेक्नोलॉजी देता है। पहले शायद हमें अपने बड़े बुजुर्गों से बात करने के लिए ट्रंक कॉल लगानी पड़ती थी, जो शायद वीक्स एंड डेज, जो हमारे एज के हैं वो, हाँ, यंग जनरेशन इज नॉट रिलेटिंग टू इट, पर जो हमारे एज के वो जानते हैं कि ट्रंक कॉल बुक होती थी ना, एवरीथिंग इज अ कॉल अवे. Technology, yes, facilitates life, but it comes with a carbon footprint. And it's time that we have to understand that only technology cannot be an answer. एक कंट्री किस मॉडल पे ऑपरेट करता है, एक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP. अगर आपका GNP बहुत अच्छा है तो डेवलपमेंट हो रहा है, यू कॉल दिस डेवलपमेंट. बट वंदना शिवा ने अपने लेख में Staying Alive में लिखा है, this is not development, this is small development, जो एक
वेस्टर्न वर्ल्ड का पैराडाइम था और हम लोगों ने आंख मीच के उसको अपने 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 संदर्भ में, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में हम उसको उतार के ले आए हैं। एंड हेंस वी आर स्टैंडिंग एट दिस क्रॉस रोड व्हिच इज क्रिएटिंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू हमेशा से प्लानिटरी मैनेजमेंट की बात करी। वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू एंथ्रोपोसेंट्रिक रहा है, उसने ह्यूमंस को सबसे आगे रखा है। उसने ये कहा है कि ह्यूमन यूटिलिटेरियन नीड्स शुड बी फुलफिल्ड फर्स्ट, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ डाइकोटोमी, डुअलिस्टिक नेचर, माइंड मैटर, नेचर एंड इमोशन। नेचर एंड इमोशन मतलब जो नेचुरल चीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो समथिंग रिलेटेड विद रीजन है वो इंपॉर्टेंट है। सो जनरली स्पीकिंग दिस वेस्टर्न वर्ल्ड व्यूज एंड बिलीव्स is what is responsible now at the present age for treating the planet as an asset, as a resource. हमें समझना पड़ेगा, अभी वसुधैव कुटुंबकम की बात हुई कि ये हम यहाँ रहते हैं, ये वसुंधरा है, वसुंधरा मीन्स द अर्थ, और इस रिपोजिटरी को हमें लंबा चलाना है, ना कि इसलिए कि हमारे बाल बच्चे हैं, हमारे ग्रेट ग्रैंड किड्स कैसे आम खाएंगे, बल्कि इसलिए कि हमें इस धरोहर को संभाल के रखना है। उसमें भी एक वैल्यू सिस्टम है, उस वैल्यू सिस्टम को हम इंट्रिंसिक वैल्यू की तरह जानते हैं। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू था ऑफ प्लानिटरी मैनेजमेंट, दिस शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। हाउ इज दिस पॉसिबल? अर्थ सेंटर्ड इसको कैसे करें? इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए Government of India in 2022 has done a wonderful effort of trying to understand environment, health, साइंस, एंड इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा इंडियन नॉलेज सिस्टम विल बी वर्किंग बेस्ट एटलीस्ट इन आवर कॉन्टेक्स्ट, इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज ये हमारी चीज, हमारे वेदास, उपनिषद, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में जरूर लिखा है। ये जरूरी है कि हमको उसको समझना पड़ेगा और इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट उसको ट्रांसलेट करके हमें उसके अपने अनुरूप ढालना पड़ेगा। सो Earth-centered management, which is talking about human interconnectedness, which puts cosmocentric value at the first, which talks about nature, all species, all animals having an inherent value, and of course it also understands कि ये जो nature है, जो ये पर्यावरण है, ये infinite नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम लेते रहेंगे और ये कहीं ना कहीं से इसको ड्रॉ करते रहेंगे। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक थ्योरी थी जेम्स लवलॉक की, गाइया हाइपोथेसिस, जो कहते हैं कि आप इधर गड़बड़ करो, कहीं और से वो अर्थ अपने आप को ठीक कर लेगा और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नो, इट्स नॉट हैपनिंग एनीमोर, वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड इट, और आगे के समय में शायद इट ओनली गेट्स worse. So we will look into the foundational texts like Shrutis, Smritis, Vedas, Upanishads, and also other classical systems like Ayurveda, Vriksha Ayurveda, in which Indian knowledge system is not peripheral but central to the entire vision, this entire vision of environment. So आपने देखा है कि इस सिस्टम में, वेदास में, मैटर को कभी भी इनर्ट नहीं समझा गया, इसको मैटर नहीं समझा गया, इसको भी रेवरेंस के तहत देखा गया। इट वॉज गिवन अ सेक्रेड क्वालिटी, दे वर worshipped as living deities. There are a lot of hymns in Vedas and Upanishads which talks about, in Rig Veda, say for instance, Agni, Vayu, Surya, Abba, they are all expressions of worldview, and they say it has been given a sacred quality. In Atharvaveda, there is Prithvi Sukta. There are 63 verses in Prithvi Sukta which says, मैडम ने अभी बोला था, माता भूमि एंड उस familial bond को exhibit करता है। So we need to look into the Vedas and Upanishads. We need to understand the concept of Trita, cosmic order. ये क्या था cosmic order? It talks about a balance between natural, moral and spiritual dimensions of everybody's existence. कहीं भी ये तालमेल गड़बड़ हुआ तो चीजें रह जाएंगी। Human beings are not separate from the order. Human beings do not enjoy any kind of superior authority as compared to others. ये हमारे वेदास उपनिषद में बार बार इसका जिक्र आया है। वसुदेव सर्वम. This has been mentioned in Bhagavad Gita, verse 19, chapter 7, which says Supreme Being resides in all. And He resides everywhere. Sarvam avartya tishtati. Bhagavad Gita, Mahapuran. How was this world created? इसको हम sacral क्यों कहें? इसलिए कहें, अगर हम अपने वेदास उपनिषद में जाते हैं, because the father of the creature, Lord, made the sky.
He made water, from water he made fire and Agni. This has been told in Moksha Dharma in Mahabharata. And also, the similar thoughts have been repeated in Rig Veda by say, God and nature are same. There is no concept of उद्यता एंड प्रत्यय, मतलब ऊपर नीचे, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, जो मैं लैंड पिरामिड की बात कर रही थी, वो यहाँ पे नहीं की गई है, क्योंकि सब ये कैसे क्रिएट हुए हैं, तो एवरीबडी इज इक्वल. द ईश्वश्य उपनिषद सेज ईश्वश्यम इदम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्यम जगत, मतलब whatever exists in the world should be enveloped by Lord. Okay, I have been asked to be a little brief, so I will now like to just quickly switch over. धर्म की भी बात कही गई है. धर्म यहाँ पे रिलीजन का तात्पर्य नहीं है. धर्म मतलब आपका क्या धर्म होता है towards everything, towards human being and towards nature also, which has been discussed in Mahabharata when it says dharma rakshati rakshata. Now I'll quickly yeah, there is Ayurveda, there is Vriksha Ayurveda. Vriksha Ayurveda में यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप एक पेड़ पौधे लगाते हैं, तो the benefit is like having 100 sons. कहते ना आपके घर बेटा हो गया तो बहुत खुशी की बात है. It is like having 100 sons. There are also references which says in modern science, if we today interpret it, we say, oh yes, people को मत काटो क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड absorb करता है, oxygen release करता है. These have all been mentioned in Vriksha Ayurveda. Do we not have to go back and look into these kind of references which have been there in our religious text? I would like to say here that I'm constantly talking about Vedas and Upanishads, all religion in the Indian knowledge system, Buddhism, Jainism, Sikhism, all of them have their preachings with regard to environment. So what we need to understand is that this approach is very different from the secular sustainability framework, where ecological responsibility was a rational calculation, where it was resource management, not a dharma, where it was not a moral and spiritual obligation. So now I would like to tell you Indian knowledge system or SDGs, जो आज का मेन मुख्य मुद्दा है, ये क्या था? SDGs एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क बनाने की बात की गई थी, जिसमें 17 कंपोनेंट्स दिए गए थे. पहला कंपोनेंट फर्स्ट इज जीरो हंगर. जीरो हंगर कैसे होगा? अगर आप वृक्ष आयुर्वेद के बारे में पढ़ें तो उन्होंने सब कुछ दिया है. पेस्टिसाइड्स कम यूज करो, क्रॉप रोटेशन करो और इंटरक्रॉपिंग करो, नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करो इन द फॉर्म ऑफ काउ डंग. Was it not there? Similarly, good health and well-being. The whole world has understood the positives of yoga. So there has to be a balance. There has to be a balance between body, mind, and spirit. Quality education. Gurukul system talked about the quality education, and this quality education was holistic. It was trying to integrate physical postures, breathing practices, meditations, vocational skills, environmental awareness also. Clean water and sanitation. बहुत सारी ऐसी बंजर जगह थी जहाँ पे पानी नहीं था, और हमारे इंडिजिनस प्रैक्टिस से वहां पे पानी प्रिजर्व होता था. राजस्थान की बाउली सिस्टम, नागालैंड का जोबा सिस्टम, महाराष्ट्र का फड सिस्टम, तमिलनाडु इट इज कॉल्ड प्री स्ट्रक्चर. और इन नॉलेज को, इंडिजिनस नॉलेज कहाँ से आता था? उनके लोकल वर्नाक्युलर लिटरेचर से, व्हिच वाज सपोर्टेड बाय रिलीजन. So there has to be responsible consumption and production, which has been talked in SDG 12. SDG 15 for life. एक उदाहरण के तौर पे आप सबने सुना है विश्नोई कल्चर. What is this? This is life on land, जहाँ पे there were religious injunctions to say आप deer नहीं मारेंगे, black buck नहीं मारेंगे, खेजड़ी trees को preserve करेंगे. So there has been this work which has been going on in our Indian scenario from times immemorial. We need to understand the holistic orientation, the lived practices. We need to understand the concept of environment which was embedded in us. It was not something external to us, but it was embedded in us. Gadgil and Guha have worked a lot. They said indigenous practices थे, community-based practices थे, और इसके तहत हार्वेस्टिंग प्रॉपर्टी होती थी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता था. देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड ग्रूव. आज भी केरला में यू सी लॉट ऑफ पॉकेट्स वेयर दे प्रे टू बी सेक्रेड ग्रूव, और वहां पे कोई इंसान कभी भी अपने रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए पेड़ों को नहीं काटता. सो दिस वाज देयर. वी नीड टू हाउएवर अंडरस्टैंड दैट द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ पैराडाइम
which is working today, the Western model, which was working on the ethos of industrialization, capitalization, which capitalism, this needs to be stopped somewhere. We need to understand that Government of India's Indian national policy on Indian knowledge system trying to reflect the shift by talking about the relevance of Indian knowledge system, education, environment, and health needs to be brought forward. The policy acknowledges that Indian knowledge system is not only talking about scientific technique, but also value systems which are deeply rooted in dharma, our duties, moral responsibilities, lok sangra, abhyuday, well-being of all, and a broader civilizational framework for sustainability. So, unlike the Western technical orientation of SDGs, which talked about it being an external mandate, we need to change this paradigm. We need to reflect back into the texts which talked about reverence, which talked about respect, which talked about care. The present modern paradigm says 3 Rs: redistribution, recycle, and I'm forgetting the third one. But in the Indian knowledge system, it is respect, reverence, and care. So, as Vasudev Kutumbakam says, this world is one family. This ethos can only be brought forward if there is an environmental stewardship. और ये environmental stewardship optional नहीं होना चाहिए. ये essential होना चाहिए for the flourishing of humanity and planet. और इसकी समझ हमें तब आएगी जब हम थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे कि हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा गया है. Thank you. So, thank you so much, ma'am, for such an enlightening words. Now, moving forward, I want to invite Dr. Avtar Singh, our chief guest. His and Chief Orthopedic Surgeon Amandeep and Ujala Sickness Group of Hospitals. Dr. Avtar Singh stands tall as one of India's most accomplished orthopedic surgeons with a career dedicated to advancing patient care, surgical innovation, and medical education. The head of the department and the chief orthopedic surgeon, he has been instrumental in establishing the institute as a center of excellence in orthopedic and trauma management. Dr. Singh completed his MBBS and MS from the Government Medical College, Amritsar. His pursuit of excellence took him overseas, where he completed a prestigious fellowship from the British Orthopedic Association in London and Leicester in 2011, gaining international exposures in advanced orthopedic techniques. He has successfully performed more than 1.5 lakh orthopedic surgeries and completed over 27,000 hip and knee replacements. He has been recognized as the first surgeon in North India and fifth in India to introduce AI robotic assisted knee replacement. He is the first Punjabi surgeon to perform robotic knee replacement surgery. Dr. Singh's contribution has earned him national and international recognition, including his being named Doyen of Healthcare by Tribune, inspiring orthopedicians of India by Economic Times, and the feature of Hindustan Times as one of the faces of success. Dr. Singh is equally passionate about academics and training also. He has authored over 25 publications in national and international journals and regularly presents at leading orthopedic conferences worldwide. Today, he continues to serve as a mentor, innovator, and a healthcare leader, inspiring both his peers and young doctors to pursue excellence in the service of humanity, not just in India, but globally. So now I invite Dr. Avtar on the dais. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। Thank you, ma'am, for the kind words. Respected chairman, principal, and the management of the Hindu College, a very famous old institute.
dignitaries on the dais, off the dais, youngsters, especially the backbenchers, the restless minds. I can see them. A very good morning. I love backbenchers because I was also a backbencher. And backbenchers, mind you, they are not idiots, they are very smart people. So, so they are otherwise intelligent people and they're small, but they are restless. They just want to move out. And I feel that I'm an odd man out in today's gathering of intellectuals, scholars. They always think with their brains, and orthopedic surgeons, they think with their heart and they work with their hands. So that is the difference. But still, it was my duty to come here and be part of this great gathering. And for that, I'm indebted to the management. My previous speaker has given you so much thought-provoking things. I mean, it has left nothing for me to elaborate. She has highlighted all the things. I'll just make it short and make it convenient for people to understand and won't bore them for a long time. So friends, starting with the conference, it's not easy to organize a conference. It takes months together, a lot of brainstorming, and a lot of money also gets involved. So it's like marrying your daughter. It's that kind of a work. ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਫੁੱਫੜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ So organizing a workshop is like that. My international conference is starting tomorrow, and I know the hell through which we are going on. Orthopedic conferences are pretty expensive to organize and takes a lot of time. So anyhow, you all know that she has already highlighted that our ancestors lived in harmony with the nature. He has already given all the examples like sacred groves, step wells, boilies, airy system, mud homes. Mud homes, I remember in my village, I used to have a kacha house when I was a child. I used to go there every year, work in my fields. I have experienced all that. ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਪੋਚੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਸੋ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਏਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ even to the hill stations we need air conditioners. I go to Srinagar for my hospital work every month and it's terrible now. You cannot sleep without air conditioning. So the things have changed a lot. And this crisis is of our own doing, actually. We have overexploited the things which God has given us. We have overexploited the water resources, and we have overexploited the nature in all aspects. That's why we are now suffering. And the recent example is drought floods. We are suffering from them. And the Himalayas are like suffering from landslides. So many people are getting killed. So where we are heading to, we at the moment have no answer to this. Then there are other side effects of all this exploitation of nature. We are getting extreme rotation of weathers. And then rising number of diseases, actually. You wait for a couple of days or weeks, we'll be flooded with the after effects of these floods. We'll be having loads of infectious diseases. Our hospitals will be like terrible places to manage. A lot of patients with dengue, malaria, gastroenteritis will be flooded with all these kind of patients.
and we are not happy getting them. As an orthopedic surgeon, I'm least happy getting them. So friends, the old saying is, there's a healthy mind lives in a healthy body. But how will we have a healthy body if we have a bad environment actually? It's not possible. Our air is polluted, thereby choking our people. A lot of asthma patients, a lot of tuberculosis patients, respiratory diseases. 30, 40 years ago, we never heard of any respiratory specialists. So we are now having loads of these respiratory specialists now. We have destroyed the water, made it impure, and we are having these infectious problems. We have polluted the earth. Over fertilization, a lot of fertilizers are being put into it. So we have basically destroyed the very essence of those teaching of our gurus or our religions. A single liner was that Param, Pavan Guru, sorry for forgetting, Pavan Guru, Pani Pita, Mata Mat. Although we recite it every day, but we are not actually following it. We need to change ourselves and we need to follow all these things. So let's act together if we really want to make a change. It should not remain on the stage only. We need to follow it. Every single human being has to follow it. We need to start from the education. Actually, all this, what we are speaking on the stage, should be part of the college or school curriculum from the very beginning. With the medical schools, they should be taught everything what we are talking about today. And we should use the media and the influencers to promote our ancient good things. We should regulate the groundwater. There should be some limit to that. And remember, if we don't stop that, this land of green revolution will be a desert one day. Remember that. That has been highlighted a number of times. Most of our districts now, they are in red zone actually. They are very close to becoming the desert land. So governments should do a lot of things to save us from this. They should promote electric vehicles. They should make policies like that. They should promote the solar, wind, and bioenergy. And they should fund climate resilient infrastructures. Hospitals and educational institutions, gurdwaras, mandirs, masjids, they should lead by example. I can't name many of these institutions having water harvesting. That's where we are missing. So I'm happy to announce that all my hospitals are having water harvesting system from the very beginning. So let's not wait for disasters to happen. Let's get together and fight it out. And ਅਖੀਰ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ। So just few examples, right? That's a sad thing actually to see. ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 2-2, 4-4 ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ। And going beyond this, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਚੁਅਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ electric crematorium use ਕਰ ਲਈਏ, that will be the best thing to happen to the man. And I'm again happy and proud to announce that I used electric crematorium for my father and my mother. And I will use the same for myself. With these words, I'm once again grateful to the management and all the audience and scholars. Thank you so much. Thank you, sir, for your inspiring and motivation words and how you told us to be we should be in persons in action. So moving forward, now I would like to invite our guest of honor,
Mr. Dr. Amit Yadav, Director of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi. So who has been a continuous support to our college for organizing different conferences and seminars. So in the field of philosophy. So I welcome you, sir. And coming to the introduction of the sir, we are truly privileged to welcome our esteemed guest of honor, Dr. Amit Yadav. He is currently serving the Director of Planning and Research at the Indian Council of Philosophical Research. Along with his present position, Dr. Yadav is an Assistant Professor of Philosophy at the RAMT PG College of Ghaziapur. He has held several important administrative responsibilities, serving as a District Nodal Officer for COVID-19, as NSS Coordinator and as Sweep Coordinator under the Election Commission of India. He has also contributed as an observer for the National Testing Agency and a member of various selection committees. He has authored and published several research papers in reputed journals at national and international level, and has actively contributed to academic discourse in the field of philosophy. Now it is the time to hear from our esteemed guest of honor. Sir, I am honored to welcome you to the dais, and please enlighten us with your kind words. थैंक्स मैम। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आप सभी को मैं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और स्वयं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित करने की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इसकी सफलता की कामना करता हूं। पंजाब की ये धरा अपने शौर्य, साहस, सेवा, समर्पण और बलिदान के लिए जानी जाती, और इस धरा पर मुझे मैम ने बुलाया, संयोजिका ने, डॉक्टर अरुण कंधारी जी ने मुझे बुलाया। मैं उनके लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पे होंगी आगे। यहाँ पे न केवल दर्शन शास्त्र बल्कि विभिन्न विषयों से यहाँ लोग आए हुए हैं, और वो अलग अलग एस्पेक्ट से इस पक्ष को रखेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया है वो क्यों आया है और क्यों जरूरी है। और इकोसिस्टम को बचाने की बात हो रही है, इन्वायरमेंट को बचाने की बात हो रही है। अभी एक वक्ता ने यहाँ पे कहा कि हमारे बहुत पहले इकोसिस्टम आ चुका था, इन्वायरमेंट आ चुका था, हम बाद का डेवलपमेंट। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि उस सिस्टम को बचाए रखने में हमारी क्या भूमिका है। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते उसमें, हम केवल कुछ चीजें कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। हम अपनी ग्रीनरी को बचाए रख सकते हैं, हम नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो प्रकृति में आराम से समा नहीं जाती नष्ट होने के बाद, उन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीजें, बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हुई और भी चीजें यहाँ पे आई। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक भूटान सा छोटा सा देश है, उसने जो है SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जगह ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया हुआ। और ये ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, ये हमारी जो सनातन व्यवस्था रही है उस व्यवस्था में एक बात कही गई, अयम निज परोवेति गण उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो इसी अवधारणा को उसने आत्मसात किया है कि व्यक्ति का भौतिक संसाधन उसकी सफलता या उसके विकास का स्टैंडर्ड नहीं हो सकता जब तक कि उसकी प्रसन्नता को हम उसमें शामिल न करें। और उसकी प्रसन्नता तब है जब वह स्वस्थ है, स्वस्थ चित्त है, स्वस्थ मस्तिष्क है, और फिर जब स्वस्थ मस्तिष्क उसका रहेगा तो वो बेहतर कार्य कर सकेगा। मैं इस महाविद्यालय जिसमें मैं आया हूँ, कल मैंने ब्रोशर मंगाया और मैंने देखा कि वाकई ये कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है जो 1924 में स्थापित हुआ। 100वां वर्ष इसका पिछले वर्ष रहा होगा, स्वर्ण जयंती वर्ष। और इस कॉलेज के जो एलुमनाइज हैं वो उनके विषय में क्या ही कहा जाए। माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी यहाँ से आए, प्रथम फील्ड मार्शल साहब यहाँ से आए, किशन सिंह बेदी साहब यहाँ से आए, कपिल शर्मा को हम सभी जानते हैं, जो न केवल
भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जिन्होंने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया। तो मेरा कहना ये है कि इस पूरे क्षेत्र का जो योगदान है, अगर हम देखें कि ये जो समस्याएं भी निकल के जो आ रही हैं कि जो अभी मैम ने चर्चा किया कि पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी हमारी एक सामरिक आवश्यकता थी। जब विदेशों से हमारे यहाँ खाद्यान्न आने के लिए मना हो गया तो हमारे उस समय के जो नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ ही अधिक से अधिक अनाज पैदा करने की मुहिम में लगेंगे, हम सिंचाई की व्यवस्था, हम फर्टिलाइजर्स की व्यवस्था करेंगे, और वहां से ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होता। और फिर कुछ समय बाद उसकी समस्याएं भी आती। अब हमारे पास कार्बनिक कृषि का विकल्प मौजूद है, तो हमें उस तरफ देखना चाहिए और ये हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रण करें और हम न कर पाए। ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें केवल वृक्ष लगाने और लगाने के बाद उसका संरक्षण करने का भी प्रयास करना चाहिए। मैं एनएसएस में डिस्ट्रिक्ट नोडल था और उस दौरान हर साल लगभग लाखों पौधे आते थे। मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में था, यूपी का एक छोटा सा जिला है पूर्वांचल क्षेत्र का, तो वहां पे लाखों पेड़ हर साल लगाए जाते, लेकिन समस्या ये आती थी कि उन पौधों का संरक्षण कैसे किया जाए। हम पौधे लगा तो देते हैं लेकिन हम उनको संरक्षित नहीं करते। तो ये प्रयास होना चाहिए कि जितने पौधे हम लगा रहे हैं हम उनको गोद लें, हम अपने बच्चे की तरह उनका पालन पोषण करें और ये सुनिश्चित करें कि जब तक कि वो बड़े न हो जाए, जब तक कि वो अपने खाद पानी का इंतजाम स्वयं न करने लग जाए, तब तक हम उनकी सेवा करें। तो इन बातों के साथ मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता और मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए और इसके बेहतरीन आयोजन के लिए कामना करता हूं और पूरी टीम को। और मैं ये भी देखा इस कॉलेज में एक बड़ी अच्छी चीज थी कि यहाँ समाज के विविध पक्षों को जोड़ा गया। यहाँ पे हम तो अपने सोसाइटी के जो हमारे कहें कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स उनके साथ हमने एक अच्छा कनेक्टिविटी रखी है कि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे जो नीडफुल बच्चे हम व्यवस्था कर पाते हैं, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनके लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हैं। देखिए ये पूरी सोसाइटी जो हमारी है वो ये कॉलेज एक अलग चीज नहीं है, यहाँ से ही बच्चे पढ़ के जाते हैं और जो हम संस्कार उन्हें देते हैं और जो हम उनको डिलीवर कर पाते हैं वही फिर वो आगे भी चलता है परंपरा के रूप में। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। कल मेरे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में ये हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है और कल ही हमने इसकी प्लेस ली, शपथ ली कि जहां भी ऐसी जगह है जहां हिंदी को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें हिंदी में अपनी बात रखनी चाहिए। तो मैं अपनी कल की ली हुई शपथ का अनुपालन कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि हिंदी ही नहीं, ये जितनी भी भाषाएं, हिंदी के अलावा पंजाबी, गुजराती, ये सब हमारी ही भाषा है। और हिंदी पखवाड़ा का मतलब जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं हम सभी के उन्नयन का प्रयास करते हैं। उसमें केवल हिंदी नहीं आती। हिंदी का मतलब है हमारे क्षेत्र का, हमारा जो भारत देश है उसमें बोली जाने वाली समस्त भाषाएं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कामना करता हूं। Thank you, sir. Thank you so much for your words. Now, without further ado, now I would like to humbly request esteemed chairman of our college, Deputy Mayor, to kindly come and impart his wisdom and give the vote of thanks to our chief guest of honor, and now I would like to invite Dr. Shri Deepak ji, our alumni, on the stage so that we can felicitate them for his continuous contribution to the college. दीपक जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आज से 3-4 साल पुरानी बात है। सर प्रिंसिपल ऑफिस में आए तो मैं इनको जानती थी नहीं तब, और उसके इन्होंने कहा कि कुछ हेल्प हो तो मुझे बताना। उसी टाइम पे मुझे कास्ट याद है, चोपड़ा बच्चा बीकॉम का था, तो मैंने सर को कॉल किया सर कि एक बच्चे जिसके पास 10,000 रुपीज कम है। सर ने उसी टाइम पे ही मेरे को 10,000 रुपीज भेजे और इन्होंने कहा कि आप मैम उसके बच्चे की फीस दो। और लास्ट ईयर से इन्होंने इस चीज को एक रेगुलर फीचर बनाया, हर साल ही हमें 50,000 रुपीज देते हैं और बहुत ज्यादा गर्व है। कहते हैं कि
जज्बा जो होता है वो मायने रखता है, शब्दों से बातों को नहीं बता सकते। जो फीलिंग्स है इनकी, हमें उनको देखना ज्यादा जरूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो यही कही हमें कि ये जो 50,000 है ये कंटिन्यू रहेगा, इनके बच्चे जो है वो भी इस चीज को, कॉलेज को पे किया करेंगे। हम ही कहते हैं कि उड़ना तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन जिसके पंखों में जान होती वही आगे पहुंचता है। सर क्या सबसे बड़ी और चीज ये है कि इन्होंने यहीं से ही, हमारे कॉलेज से ही MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं हिंदू कॉलेज में मुफ्त पढ़ा हूँ और मैं अपना खर्चा बता रहा हूँ, तो एक साल ही है। हमारे प्रिंसिपल हालत से जेवर ही थे यहाँ पे, तो तब हमारे इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं चल रहे, तो मुझे घर से ले गए थे। तो मुझे ना कोई बुक्स का खर्चा, ना फीस कोई, और इवन मुझे 5 रुपये रोज मिलते थे। तो मैं वो खर्चा उठा रहा हूँ, तो भेज रहा हूँ। थैंक यू। So I invite Dr. Shilpadeep ji to please come and give the vote of thanks to. Subject for today's seminar: sustainability of environment with respect to Indian culture or Indian knowledge. The previous speakers before me have deliberated very wisely and very precisely on this issue. Two things I want to say from my side is that preservation of environment is in our DNA. Nobody teaches us about the environment sustainability. It's in our DNA. For example, each Indian household is based on I can say a thing that is recycling, whereas other countries use and throw policy works on use and throw policy. Second thing our Indian culture teaches us is restrict your needs. Your needs should be restricted. These two things contribute a lot for the sustainability of the environment. My sincere thanks to Dr. Avtar Singh ji for sparing the valuable time from his busy schedule. Heartfelt thanks to Director ICPR, Dr. Amit ji, for facilitating this conference and encouraging us by his benign presence. My gratitude to Dr. Sujata, keynote speaker for today, for her precise deliberation. I haven't heard any speaker before that being so and conveying a lot of things. My thanks to our faculty member, Ms. Anu Kandhari, HOD Philosophy, for taking a good initiative and organizing a very well-disciplined and organized conference. My thanks to all the faculty members for helping her and making this conference a reality. My great thanks to all participants who are participating in this conference, because they are the basis of this conference. Without them, the conference would have never been a successful thing. Thank you very much. Thank you.
Thank you, Dr. Avtar Singh, for taking the time and be with us in this conference. Thank you so much, sir. To proceed further, it is with a great pleasure and excitement that I stand before you to announce the release of the journal, Indian Journal of School Health and Wellbeing, co-edited by Anugandhari, and remarkable book, Mental Health and Human Wellbeing, Psycho-Social and Philosophical Perspective, authored by our two distinguished assistant professors of our college, Mrs. Anugandhari, Head of the Department of Philosophy, and Dr. Priyanka Mahajan from the PG Department of Economics. So now it is the time to give the formal inaugural of the book. So I invite Dr. Shivani to the stage. So without further ado, I would like to humbly request the Secretary, Shri R.K., for the words of his wisdom and insights, and give the formal vote of thanks to all the dignitaries and our participants for today's conference. Gupta sir, please come on, sir. Yeah. नाचते बैठे सारे मेरे कुलीग श्री कुलदीप मेहरा जी, प्रिंसिपल जी, और सभी रिस्पेक्टेबल गेस्ट, और खास करके स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने लंबे समय तो एक कॉन्फ्रेंस नू कामयाब बनाने वास्ते आराम नाल बैठ के सारे गेस्ट दी स्पीच ते उन्हां दे विचार इस कॉन्फ्रेंस नू संपूर्ण बनाने वास्ते बड़े आराम नाल बैठ के सुन रहे हो, डिसिप्लिन दे नाल सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी गल है। और स्टूडेंट्स पे सानू ज्यादा होप है कि इस एनवायरनमेंट को बचाने वास्ते इन्हां दा एक मेजर रोल होएगा। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ भी कॉन्फ्रेंस कराने आ स्टेजेस से बहुत लंबे चौड़े विचार जरूर दिन्ने आ, पर उन्होंने प्रैक्टिकल शेप देने वास्ते कि बच्चों को आदत पैनी डे टू डे बहुत जरूरी है। बचपन तो जे असी अपने स्टूडेंट्स नू या बच्चों नू इन्वायरमेंट वास्ते सिखावांगे तां ही असी कामयाब हो पावांगे, नहीं तो लेक्चर्स देने का शायद कोई इन्ना ज्यादा फायदा ना। मैनू याद है मैं अपनी छोटे जे इंसीडेंट नू अपने बचपन नू याद करके वो इन्वायरमेंट वास्ते सोचते
मैं किसी एक पिंड तो आया, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर तो हाँ। मैं लाइट जिहड़ी है ना, बिजली 6th क्लास च देखी है, बिजली नहीं सी है पिंड, और 6th क्लास तक मैं लैंप की रोशनी च पढ़े। और जिस इंसान ने लाइट नहीं देखी ते इलैक्ट्रिकल चीजां ते ਉਹਦਾ इलैक्ट्रिकल चीजों बारे तो सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी गल कही, मड हाउस की गल की थी। मैं अपनी मां नूं हमेशा गोबर का लेप करदे घर च देखिया, और जो मैं 6th क्लास च पहुंचा ते तां रेलवे स्टेशन ते लाइट का एक बल्ब देखा, जो कि सारे पिंड के बच्चे रोज ये सोचते सी, वो बल्ब कोई रोज सानू कहंदा सी कि रात नूं कोई बल्ब जगया करेगा। और वाकई उस वक्त जिसों मेरा बचपन बीतया ते कोई फैन की तो जरूरत ही नहीं सी, फैन मैं देखा भी नहीं सी बचपन च, ते गर्मी नहीं सी होंदी। आज इस लाइट ने साडी जीवन नूं बहुत सुखावां दे करता है, पर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पैदा करती है। ਉਹਦਾ एक मेजर फैक्टर है साडी पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ठीक रखने की जरूरत है। ਸਾਨੂੰ हर अपने इंसान ਨੂੰ अपने बच्चे ਨੂੰ सिखाने की जरूरत है। एनवायरमेंट अपने आप ही ठीक होएगा। ये कोई ਸਾਨੂੰ सिखाना ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ हर चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं पैनी चाहिए। हर पेरेंट्स जे अपने बच्चे ਨੂੰ सिर्फ सिखा देना एनवायरमेंट ਨੂੰ ठीक किदां रखना, मेरा ख्याल है बाकी चीजों की जरूरत जी है उससे दिन खत्म हो जाए। पानी की वेस्टेज, हवा नूं खराब करना, धरती माता ते दरखत लगाने, और मैं बचपन से हमेशा दरखत के थले ही पढ़िया। साडे स्कूल भी सारिया क्लासेस दरखत के थले लगदियां सी गर्मियां च, उत्थे भी बिजली नहीं सी हैगी स्कूल च। तो इस करके मैं तो यही मेरी कोई सारे पेरेंट्स नूं, सारे बच्चों नूं सिर्फ इको ही रिक्वेस्ट कर सकदा कि अपने बच्चे नूं, छोटे तो छोटे बच्चे नूं सिर्फ एनवायरमेंट ठीक करने वास्ते, इन्हां चीज़ों की वेस्टेज नूं बंद करने वास्ते समझाता जाए तो एनवायरमेंट नूं बहुत ज्यादा लंबे चौड़े शायद असी गल्लां जड़ियां करते हैं वो साडे बेशक साडे धार्मिक किताबां दे अंदर है। आज मैनू नहीं लगता कि साडा कोई बच्चा धार्मिक किताब पढ़ता है। ये सिर्फ स्टेज से गल्लां की जा सकती हैं। सिंसीयरली मैं एक जरूर कहूंगा कि आप अपने बच्चे नूं टाइम नहीं देंगे। ये प्रकृति नूं ठीक किदां रखना सानू सिखाउंदी पई है। और हर बिजनेसमैन, इवन सारे अंपलाइज भी असी जिहड़े लोग इत्थे बैठे हैं, अपने बच्चे नूं जे एनवायरमेंट नूं बचाउण वास्ते ही सिर्फ सवेर तो लैके शाम तक सिर्फ बच्चे नूं कंसल्ट करना, तो मेरा ख्याल एनवायरमेंट बच सकता है। तो सानू अपने जिहड़े ग्रंथ है सर, वो भावें किसी भी धर्म नाल बिलोंग करते हैं, उन्हां ग्रंथां नूं बच्चों नूं पढ़ाउण दी जरूरत है। एनवायरमेंट ते अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो मैं सारे आए हुए गेस्ट, डाइस पे बैठे लोग और साडे रिस्पेक्टफुल सारे डॉक्टरेट लोग, नो डाउट उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, स्टडी की है, बहुत उहदे ते रिसर्च की है, किताबां लिखी हैं, जर्नल छापे है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हिस्सा लेंदे। मैं उन्होंने बहुत बहुत थैंक्स करांगा। इन्होंने इत्थे आके साडा मान बढ़ाया और साडे कॉलेज नूं हमेशा असिस्ट करते रहे हैं, और पैसे के रूप च भी और
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਗੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। So thank you, Shri R.K. Gupta ji, Secretary, Hindu College Managing Committee. We are grateful for your eloquent words, and your leadership and support is invaluable. And we are privileged to have you with us to guide throughout the event. Thank you. So there is one announcement that those who have a paper presentation in a first offline technical session, they must please submit their PPTs at the back of the auditorium so that the technical session can run smoothly. So as we conclude the momentous inauguration ceremony, I extend a warm invitation to all esteemed delegates to join us for a delightful cup of tea along with our staff members. Then after that, we will again gather there for the first technical session. So thank you all for the presence here. Thank you so much, everyone. Meeting